So good morning, ladies and gentlemen. Namaste and a very warm welcome to all of you to the Blubber's 4th Global Education Meet and the 118th roundtable today. In the last 117 roundtables, more than 1,500 school leaders have spoken on this very platform, shared their ideas, opinions, observations, innovations, and what all new they're doing in the education space and very specifically K-12 or simply put, what's new in schools. तो पिछले इतने महीनों में जब हम लोग IIM ऑडिबल करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पे हम लोगों ने जो सबसे मेजर चीज करी, we tried to create an idea repository for the education sector focusing on the K-12 space. क्योंकि एक चीज जो अब दुनिया में सबको समझ में आ रही है कि आइडिया किसी की बपौती नहीं है, किसी की मिल्कियत नहीं है, तो it should be flowing democratically और हर किसी को freely और हर समय अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं पता कि आपसे कोई इंफ्रा मैच कर पाएगा या नहीं, बट ये श्योरिटी है कि आइडिया तो मैच कर ही लेगा. सो ट्राई इनोवेटिंग, ट्राई शेयरिंग, क्योंकि वही एक चीज है जिसने इतने लंबे चौड़े लॉकडाउन में सबको आराम में, कंफर्टेबल और आनंद लेते हुए रखा. सो विद इन द नेक्स्ट 60 to 100 मिनट्स दैट वी हैव विद यू, हम आज कोशिश करेंगे आपसे जानने की कि अब जब हम स्कूल्स को, कॉलेजेस को या एक तरीके से पूरी शिक्षा को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाट इनोवेटिव स्ट्रेटजीज वुड यू यूज विद इन योर इंस्टीट्यूशंस दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी 2021 के लिए शिक्षा की भविष्यवाणी क्या है. थोड़ी सी क्रिस्टल गेजिंग हम आपसे करवाएंगे कि क्योंकि 2020 में तो सबको पता था कि हमें हमारे घरों के अंदर रहना है. 2021 वर्चुअल से रियल वर्ल्ड का ट्रांजिशन है, जो उतना आसान लग नहीं रहा जब स्कूल्स खुल रहे हैं, क्योंकि अक्रॉस इंडिया जब अभी बातचीत हो रही है तो मैक्सिमम स्कूल्स ने जहां पे खुले हैं, लाइक कर्नाटका, आसाम, अब राजस्थान ने भी अलाउ किया है, काफी स्टेट्स कर रहे हैं, तो सब जनों का जो इमेजिनेशन था कि जिस दिन स्कूल के दरवाजे खुलेंगे उस दिन वापस से फ्लडगेट होगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं. एवरेज अटेंडेंस 3 से 12% के बीच में ड्विडल कर रही है और बाकी बच्चे स्कूलों में है नहीं. और एक चीज की सर्टेनिटी जो सबको समझ में आ रही है 2021 में है, वो है अनसर्टेनिटी. तो अब इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या आइडिएशन आप करेंगे, एंड व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन 2021 टू एजुकेशन. सो बिफोर वी बिगिन, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म. This is a bilingual platform, so you can use English or Hindi as per your choice. Don't use a third language, I won't get it. But if you want, you can. But इन दो भाषाओं पे कोशिश करें, स्टिक करें, because एक चीज जिसमें हम बहुत strongly believe करते हैं, भाषा कभी भी ज्ञान का पैमाना नहीं होता. You can never measure knowledge on the basis of language. And secondly, ये पूरा discussion speech marathon नहीं है, ये एक 100 मीटर की sprint है. So it's a timed discussion. Once your speaking time is over, you might get muted. If you get muted, please don't get offended. It is just to finish this on time and make it enjoyable and crisp for everybody. Most importantly, enjoy the next 60 to 100 minutes, क्योंकि आप जो ज्ञान, जो आइडियाज, जो नई नई बातें करेंगे, उसमें सबसे अमेजिंग जो टॉप 3-4 बातें होंगी, they'll find space in the next white paper of Blub World, जो कि दुनिया भर में करीबन 6,500 स्कूल्स तक जाता है. और अभी हम लोगों ने जो पहले आइडियाज दिए थे, उसमें करीबन 200 आइडियाज दुनिया भर के ये स्कूल अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनकी स्केलेबिलिटी, फिजिबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, एंड हम लोग इसका फाइनल पेपर एट द एंड ऑफ द ईयर निकालेंगे कि इनमें से कौन कौन से आइडियाज हैं जो सॉलिडिफाई हो गए. सो कोशिश करें कि आपकी इनोवेशन इतने सारे लोगों तक पहुंच जाए अगले 60 मिनटों के अंदर अंदर. Thank you so much once again for joining us, and a very warm welcome once again to the Blubber's 4th Global Education Meet and the 118th roundtable. To initiate the roundtable, we have the roundtable chair today. He comes with an experience of both worlds. आप KG to PG पूरा एक्सपीरियंस रखते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी चलाते हैं, तो उनका एक्सपोजर, उनका इनोवेशन क्या कहता है और उनकी क्रिस्टल गेजिंग क्या कहती है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिम. अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर अखिल सहानी, मैनेजिंग डायरेक्टर द सहानी ग्रुप फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र. अखिल जी, a very warm welcome to you. The next 3 minutes are yours. Thank you very much, Daksh. Albert Einstein had a fantastic phrase that says that within every difficulty lies opportunity. Now, remember one thing, most of us have been experienced school leaders, and for the longest time, in the last 20 years, we've been trying to get our principals, our academics, everybody to change the way that education is done, move away from the lecture, exam-driven approach. And every teacher said, "Arey sir, we can't do it. We're used to this classroom model." There was a mental block. COVID has forced us to change that. I think, and I don't have to get into that because we don't have time. However, let me explain the concept of what is new. Let's look at the opportunity from the difficulty of 2021. Of course, the vaccine has come out and we're going to get back to normal school classes. Doesn't mean that you're going to go back to the same old lecture, chalk and chalk method of doing things. So let me talk about the concept of flipped classroom. I think some of you have heard of it, but let me expand on it.
Conventional education was that a student would come to a class. The first time they would get new information was when then a lecturer would give gyan with a blackboard, read through a textbook, and that's it. Then the student would go back home and do homework, which helped them understand that. The flipped classroom model says is that the student would get access to online content or videos or things to learn the new concept beforehand, come to classroom, and at the classroom there'll be an interactive discussion on understanding the concept. Let me explain how that works. Let's talk about history. History, we've got such a rich history in India, but all of us talk about the date of the Battle of Panipat, this one for that one, this thing happened, that one. There's no context. Unfortunately, we are focused on that. A flipped classroom model would say is that read about the dates and all beforehand, come to class and ask what exactly happened in the Battle of Panipat. What did Akbar do? What caused it? What was the underlying thing? What was the outcome? Understanding and really understanding of why this works and how it works. See, the point is that national education policy is asking us to create students who are well-adjusted citizens who can think critically. Helping students understand through long discussion and understanding in the classroom is the best thing a teacher can do. You cannot remove the teacher from education in spite of what edtech companies are trying to do. The teacher now has to become a mentor, a facilitator to promote peer learning in the classroom. I think we have a fantastic method or a fantastic opportunity for schools to do that. A second, I think that schools should really start focusing on is trying to provide emotional support to students. There are a lot of students, especially in tier 2, tier 3 schools, who are dropping out of schools, who don't have support at home for whatever reason. Why can't schools start allocating counselors to actually get deeper into child's mindset, have a little bit of clinical psychology to understand, look, yes, you do have emotional issues. Childhood and early teenagehood is actually a very tough time of people's lives. Why can't we support them emotionally to make them well adjusted? The number of student suicides, unfortunately, which is happening, is because of this lack of emotional support. So, bottom line, I think that if we start implementing the flipped classroom and we start providing emotional support to our students, we, I think, would do fantastically well as schools and colleges. And this is irrelevant for how much edtech you implement. At the end of the day, teachers are key to everything. Let's just keep on promoting teachers and developing our teachers and developing our kids. Thank you very much. Thank you so much, Akhilji, for a power-packed start to the session. To summarize what you said, you started with mental blocks being raised down. बहुत सारे हम लोग साइलोज में बंद थे, वो साइलोज पूरी तरह से टूट गए, बाउंड्रीज हट गई और कुछ नया हम सोचने लग गए. बिकॉज एजुकेशन स्पेस की एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेक्टर का, ये सबसे आखिर में मूव करता है. दुनिया के सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स फटफट मूव कर जाएंगे, ये नहीं करेगा. बिकॉज द प्रॉब्लम इज हमारे पास में टैलेंट टॉप ऑफ द पिरामिड नहीं होता. हम लोगों के पास बॉटम ऑफ द पिरामिड का टैलेंट होता है और वहां आके सारी प्रॉब्लम अटक जाती है और एस्पिरेशन करियर में है नहीं. सो वो चीजों पे बहुत ज्यादा काम करने की वापस से जरूरत है. अगली बात आपने जो कही, नॉट नेसेसरली गोइंग बैक टू द चॉक एंड बोर्ड. अब क्योंकि अब नॉर्मल कहने में खराब लगता है, इसलिए न्यू नॉर्मल कह देते हैं. And let's try to going back to a reality that's better and improved from where we were before 2020. फ्लिप क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट है. लेक्चर से डिस्कशन मोड पे आना होगा. बच्चों को स्टूडेंट नहीं, आपको दोस्त बनाना होगा, क्योंकि अब आप कस्टोडियन ऑफ नॉलेज नहीं है. कंटेंट दुनिया में फ्री है, सारा कुछ सबके पास है. द ओनली थिंग दैट यू कैन गिव इज विजडम. तो उसके ऊपर फोकस करें और दोस्ती कर लें, नहीं तो क्लासरूम बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. Teachers have now become mentors. Emotional support बहुत इंपॉर्टेंट है. Getting deep in the child's understanding. हम लोगों के पूरे सेक्टर में सबसे बड़ी तकलीफ है, हम हमारे फाइनल कंज्यूमर को जानते ही नहीं है. हम उससे बात करने को राजी नहीं है. हम लोग केवल सिलेबस इंप्लीमेंट करने को राजी हैं, क्योंकि जो वहां आ गया हमारे लिए इजी वो है. सो नाउ वी कैन नॉट गो ऑन विद द इजी थिंग्स इन लाइफ. थोड़ा सा लर्निंग पर्सनलाइज होगी, बच्चों से बात करनी होगी, उन्हें दोस्त बनाना होगा, एंड इमोशनल सपोर्ट देना होगा. जस्ट यस्टरडे वन ऑफ द स्कूल लीडर्स शेयर कि उन्होंने अपने स्कूल में क्लासेस शुरू करने के बाद जो बच्चे वापस आए हैं, उनको वापस रियल वर्ल्ड में लाने के लिए रिहेबिलिटेशन क्लासेस शुरू करी है. क्योंकि जो बच्चे वापस आए हैं, उनकी सोशल बाउंड्रीज टूट चुकी हैं, उनका कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना वो भूल गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो साल भर से हर 15 मिनट में लेटने के आदी हैं, और अब वो क्लास में वो स्ट्रेन झेल नहीं पा रहे. तो रिहेबिलिटेट करना, वापस उन्हें बैक ट्रैक पे लेके आना कि ओके अब क्लासेस ऐसे होंगी, और डिसिप्लिन एक जानवर का नाम है जिसको हमें जानना होगा. सो थैंक यू सो मच अखिल. लेट मी नाउ इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे. ही इज समबडी हु विल ऐड द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. थोड़े से मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स लाएंगे और थोड़ा सा हायर एजुकेशन लेके आएंगे हमारी रीस्टार्टिंग एजुकेशन के टॉपिक पर. सो अ वेरी वार्म वेलकम टू प्रोफेसर गौतम एस बापट, हेड ऑफ स्कूल,
School of Management, UG, MIT World Peace University, Pune, Maharashtra. Gautam ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Thank you very much, esteemed panel. Thank you very much, Daksh ji, and thank you very much, Sahani ji, for that amazing start, I would say. But I'm a mandatory disclosure. I'm no expert in school education, as Daksh ji said. That I would like to bring in a couple of concepts. I don't want to flood you with the thoughts. But then my first thought of discussion here would be that the online education has been around for more than a decade now. But the question that we should be asking that why it has not become the conventional education system in pre-COVID era, why it could not hold its roots pre-COVID. That is one question I would like to pose. Why it hasn't become a norm already? When the massive businesses around have already moved on from offline to online in the pre-COVID era itself, why hasn't the higher education has not moved online? Well, there are a couple of assumptions, couple of answers to that, but let me talk about more about post-COVID era. But then the roots, the way we are behaving post-COVID has the roots somewhere are there in pre-COVID era. First point that I would like to bring on table, I would like to put only 3 points here precisely. Online education does not mean a library of video lectures or ebooks that would simply convert class notes into PDFs or some digestible thing. Creating high quality digitized learning content must be contextualized and should be made bite-sized. To make learning more interesting and engaging, and doing this will take a very new or a rare skill set, which few organizations in the world can boast of, not all. Universities will have to bend, they'll have to collaborate with such organizations who have such skills, and they'll have to take digital pivots if they really want to be successful in post-COVID era. So this was my point number one. Point number two, new technologies, including the emerging sciences of artificial intelligence, deep learning, all the deep learning models that are being proposed can help us create customized learning plans and methods. So this second important point I would like to bring on table is use of AI and deep learning for customized learning plans and methods. Higher education institutions will have to embrace this thought quickly to overcome with the ills of the current digital higher education, because as Dorji was saying, that even the schools have opened in few places in India, they're not flooded. So they'll have to now keep this thought in mind, that the same will happen in higher education. So even if we open up universities, then they may not be flooded right away. Third thought that I would like to, and the last thought that I would like to bring on table. Yes, of course, indeed, even in the post-COVID era, offline or conventional education models will not become obsolete. They'll not go away, they'll not poof away. But of course, they will survive. However, blended learning, that is the combination of classroom and online, will be the new norm, as thought by everyone in the fraternity. Institutions, and most importantly, my third point talks about teachers. Institutions and teachers will have to blend to this new way of teaching and learning. Faculty, the teacher, will have to let go of their existing practices of transposing classrooms to online medium without applying something that I would like to call as science of digital learning. So these 3 points I wanted to put in front of this diaspora today. Thank you very much for the opportunity, Blub World, and Dakshi and everyone at your team. Thank you. Over from my side. Thank you so much, Gautam ji. आपने डिस्कशन को एक काफी मैनेजमेंट वाला पर्सपेक्टिव दे दिया, उसके आपने 3 साइलोज में उसको डिवाइड करके बड़ा अच्छे से पूरी चीज को आर्टिकुलेट किया. सो लेट मी समराइज व्हाट यू सेड. पहला, ऑनलाइन एजुकेशन हैज बीन अराउंड फॉर अ डेकेड, लेकिन उसने अपनी उतनी ग्रोथ देखी नहीं फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. देयर आर रीजंस फॉर दैट, बिकॉज जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसका कनेक्ट, उसके आउटकम्स जो है वो टेक्नोलॉजी या एडटेक से कई ज्यादा बेहतर हैं और लॉन्ग लास्टिंग है. टेक्नोलॉजी से आप कंटेंट पढ़ा देंगे, जो आपने सेकंड आपका पॉइंट कहा कि केवल कंटेंट लाइब्रेरी बना देना ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है. एंड जो स्किल सेट अब चाहिए कि ऐसा कंटेंट बनाया जा सके जो बाइट साइज हो. मुझे अभी ये डिस्कशन करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जर्नलिज्म और मीडिया की क्लास और एजुकेशन की क्लास एक साथ हो रही है, क्योंकि यही 2 टैलेंट्स हैं जो अब जोड़ने की जरूरत हो गई है. क्योंकि मीडिया से आपको सामने वाले की साइकी समझ में आनी शुरू होगी थोड़ी सी, जिस तरीके से वो कंटेंट बनाते हैं. एजुकेशन से एक्चुअल रियल कंटेंट या इंफॉर्मेशन मिलेगी.
इन दोनों का ब्लेंड बना पाना अभी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है ही नहीं, इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं जो इनको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर पाए। अभी मैक्सिमम एजुकेशनिस्ट्स हैं जो थोड़ी टेक्नोलॉजी सीख के एडटेक में कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जबकि हमें जो उनका स्किल सेट है उसको रिवैम्प चाहिए एक नई तरीके का। एंड उसके बाद आपने कहा बाइट साइज लर्निंग, न्यू कंटेंट क्रिएशन स्किल्स, इमर्जिंग साइंसेज एंड डीप लर्निंग फॉर कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लान्स। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई के बारे में हमें एक चीज जो ध्यान रखनी है, रादर जो हमें सीखनी भी है, द ओनली थिंग दैट एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कैन नॉट डू एंड विच ह्यूमंस कैन डू इज वन थिंग। अगर आप एआई को कोई नया चैलेंज देंगे तो वो केवल पास्ट ट्रेंड्स के भरोसे पे डिसीजन ले सकता है, एंड ह्यूमंस कैन एनकाउंटर प्रॉब्लम्स at their own pace, at their own choice। उन्हें पास्ट ट्रेंड्स की जरूरत नहीं पड़ती। वी आर इंट्यूटिव। तो हमारी इंट्यूटिवनेस को हम रेज टू द पावर 100 कैसे करें इज द न्यू चैलेंज ऑफ एजुकेशन नाउ, या शायद वी कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट कि ह्यूमन फैक्टर आइडेंटिफाई करके उसको इतना इंकरेज करना कि वो आगे आने वाले समय में एम्प्लॉयबल स्किल बन जाए। इंस्टीट्यूशंस एंड टीचर्स विल हैव टू यूज ब्लेंडेड लर्निंग, साइंस एंड डिजिटल लर्निंग। डिजिटल लर्निंग अपने आप में एक सब्जेक्ट बनाना होगा शायद, और टीचर ट्रेनिंग। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, साइंस ऑफ डिजिटल लर्निंग, या सॉरी, साइंस ऑफ डिजिटल लर्निंग। सो ये आपको सच में अब एक सब्जेक्ट चाहिए कि जहां कंटेंट, डिजिटल लर्निंग एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, इनके ऊपर लोगों की या टीचर्स की स्किल अपग्रेडेशन हो। वन ऑफ द स्कूल लीडर्स गिव अ वेरी नाइस आइडिया यस्टरडे कि अब हर स्कूल को एक काम करना चाहिए, आप अपने यहाँ पे टीचर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग के या ऑनलाइन टीचिंग के और ऑफलाइन टीचिंग के अलग अलग कर दीजिए, और इन दो टीम्स को पैरेलली चलाइए ताकि कभी कुछ अटके नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो काफी समय से हैं, जो आपका फिजिकल लर्निंग में एक्सपर्ट्स हैं, और बहुत सारे यंग हैं जो ऑनलाइन के एक्सपर्ट्स हैं। तो इन दो टीम्स को पैरेलली चलाइए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के 2 HR टुकड़े कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच गौतम जी। लेट मी नाउ इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे। अभी तक हम जो टॉर्च बियरर्स हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया को कैसे देखते हैं। लेट्स टॉक टू द प्रैक्टिशनर्स, जिनको ये लड़ाई हर दिन लड़नी है और जो अभी तक भी ऑनलाइन लड़ाई को लड़ रहे थे। So now invite the next speaker, Dr. Neeraj Awasthi, Principal, Modern School, Noida, New Delhi. So Neeraj ji, over to you for the next 3 minutes. A very warm welcome. Please unmute yourself. Thank you very much. So very good morning to all of you. Actually, what we have seen during this pandemic, the major shift in the students' behavior and the way they have shifted towards the real learning. So number one, what I want to point out here, that this time the shifting of learning has been like from spoon feeding to the independent learning. Earlier, the most of times we see that those जितने भी students होते हैं, वो जा तो स्कूल में टीचर्स उनको टीच करता है, गाइड करता है, then they go back home and they take help from the tutors or the parents. But this COVID बेसिकली इसने उसको गाइड किया कि इंडिपेंडेंट लर्निंग क्या होती है, एंड दे हैव स्टार्टेड द इंडिपेंडेंट लर्निंग, जो मेजर जो चेंज आया हमारे हिसाब से। और सेकंड, दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम द रीडर टू रिसर्चर। ऑनलाइन कंटेंट तो काफी हैं, ऑनलाइन काफी वीडियोस हैं, बट अगेन विच वीडियो इज मोर वैलिड, विच वीडियो इज मोर गुड, एंड हाउ दे कैन यूज दिस वीडियो इन देयर टू इनहांस देयर नॉलेज। ये एक रिसर्च का काम था, जो बच्चों को ये एक आइडिया हुआ कि रीडिंग से ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है और कंसेप्ट बिल्डिंग कैसे हो सकती है while getting so many things, because initially they were not able to purchase the books। कई लोग, क्योंकि मार्च में ही जो है लॉकडाउन हो गया, all the shops were closed, so students के पास बुक्स नहीं थी, मटेरियल नहीं था रीडिंग का। स्कूल्स ने भी जो डेवलप किया उसमें टाइम लगा, ठीक है। तो इनिशियली उन्होंने जो किया, तो दे हैव स्टार्टेड ए न्यू स्किल, दे हैव लर्न रिसर्चिंग कि हाउ टू डू रिसर्च। तो मुझे लगता है ये एक बेनिफिट हुआ, एक इनोवेशन हुई इस एरिया में कि ऑलरेडी जो रिसर्च थी वो जनरली वो ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में लोग करते थे, और इसने ये शिफ्ट किया कि हमारे स्कूल्स में ही बच्चों ने ये अपने रिसर्च करना शुरू किया। वी हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज, वी हैव गिवन सो मेनी प्रोजेक्ट वर्क्स टू आवर स्टूडेंट्स, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल था अपने इस एरिया में जिसने 3 अप्रैल को हमारा शेड्यूल था सेशन, हमने 3 अप्रैल से स्टार्ट किया, और 3 अप्रैल से हमने ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी। और हमने अपने सारे ही एग्जाम, पीटीज, हाफ ईयरली, हमने सारे जो है कंडक्ट करवाए हैं, एक भी हमने मिस नहीं किया। 19 अक्टूबर से गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने हमें स्कूल खोलने की परमिशन दी और हमने स्कूल खोले। आप जो कह रहे थे 7 से 12%, लेकिन मुझे ये कहने में बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि 25% अबव जो है स्ट्रेंथ आई। लेकिन इसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, हमने बच्चे इकट्ठे नहीं बुलाए, हमने एक क्लास को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया।
हमने उनके एग्जाम भी लिए तो 3 ग्रुप में लिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. We have prepared 3 question paper, 3 different sets, and we have called the students. We have make them more feel secure. हमने साइकोलॉजी को उनको सिक्योर फील करवाया और वो लोग स्कूल आए और 90% स्टूडेंट ने एग्जाम भी दिया. जितने भी एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने करवाए वो सब हमने ऑनलाइन करवाए और बच्चों को बोर्डम फील ना हो, हमने बच्चों को ऑनलाइन कंपटीशन, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, म्यूजिक, डांस सब करवाया, फिजिकल एजुकेशन पे. तो मुझे लगता है कि ये एक लर्निंग थी. और टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनको अपने मोटिवेट किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाएं, वर्कशॉप अटेंड करें. सीबीएसई का दीक्षा पोर्टल था, उसमें 2-3 कोर्सेज थे कंपल्सरी, वो हमारे 100% टीचर्स ने किए. तो स्किल्स भी अपग्रेड हुए, रिसर्च की आदत पड़ी, टीचर ने भी रिसर्च की, बिकॉज दे इनिशियली दे आल्सो, उनको जो बुक्स थी वो अवेलेबल नहीं थी, उनको भी अपने कंटेंट के लिए रिसर्च किया, उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई. मुझे लगता है इनोवेशन रही इसमें कहीं ना कहीं. देन पीपल, एवरीवन हैज ट्राइड टू बिकम मोर इफेक्टिव, कि मेरी टीचिंग कैसे इफेक्टिव हो, उसके लिए लोगों ने एफर्ट्स किए. और ये एफर्ट्स जो थे वो इस कोविड के टाइम पे स्कूल सेक्टर को 100% तो नहीं हम कह सकते, लेकिन एटलीस्ट 70% जो थी वो टीचिंग लर्निंग जो थी उसमें हेल्प की. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच नीरज जी. काफी अच्छे से आपने अपने पूरे रीओपनिंग को स्ट्रक्चर किया. दिस इज समथिंग दैट स्कूल लीडर्स अभी सबको सीखना भी चाहिए और करना भी चाहिए कि आपकी जो रीओपनिंग है उसको एक तो फेज वाइज मैनर में तोड़ दें. एंड व्हाट नीरज जी सेड टू समराइज दैट स्टूडेंट्स बिकेम इंडिपेंडेंट लर्नर्स. ये बात हकीकत है, सबको रियलाइजेशन हुआ कि भाई अब हमें पढ़ना है, पढ़ाया नहीं जाएगा. तो जो पढ़ाया जाएगा वो केवल गाइडेंस हो जाएगी, क्योंकि 30 मिनट की ऑनलाइन क्लास में आप केवल थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं. ऑनलाइन पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि फीडबैक नहीं होता. बच्चा आने के बाद में आपको देख रहा है कि यूट्यूब को, या आपको नहीं पता है. सेकेंडली, प्रोजेक्ट वर्क बहुत ज्यादा फोकस रहा. बच्चा रिसर्चर बन गया रादर देन जस्ट अ स्टूडेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन, और इसको हम आगे मेंटेन कैसे कर सकते हैं इज द न्यू चैलेंज. कि बच्चा वापस से आके हम उसे डिसिप्लिन में तो ले आएंगे, लेकिन जो ये अच्छी चीजें सीख गया है ये भी ना भूल जाए उस डिसिप्लिन में. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर वापस से थॉट देना होगा. ईच क्लास इन 3 ग्रुप्स, और बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकली सिक्योर करना, पेरेंट्स को साइकोलॉजिकली सिक्योर करना कि आप बच्चा जब भेज रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है. क्योंकि अभी अगर जब हम पूरा सेक्टर को देखेंगे तो ये एक बहुत आसान सी चीज दिख रही है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. न स्कूल, न सरकार, न पेरेंट, न बच्चा खुद. कोई अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, बिकॉज ये सेफ्टी हमें शायद एक बहाना भी दे रही है काम नहीं करने का. सो ये दोनों तरीके से काम कर रही है. सो हमें समझना है कि इसको हम आगे आने वाले समय में कैसे टैकल करेंगे. So thank you so much, Neeraj ji. Let me now invite the next speaker for today, Ms. Namrata Machail, who's the principal of Zeal Education Society's Junior College, Pune, Maharashtra. Namrata ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm. Thank you. It's always a pleasure to be with you, sir. I really am going to say something which I borrowed from what I have read. It's not my idea, but I really feel that it's what is the crux of what I'm going to say. To create a curriculum that functions like a playlist, that browses like Google's search result and requires students to document their own understanding. I think this is what I have made it as my tagline or the statement when I was looking at reopening of college and in the year 2021. So I also have realized that, if we can do away with 30% of the syllabus as per the all education board's decisions, we still can do away with another 30%. But because what is relevant is actually going to be useful in the next higher levels. For that, what we have done, we have already created the set of lessons or topics which are going to help them to get to class level board exams. Because so far, I have always believed, and I have already incorporated this from this year onwards, that every level before 12th is a qualifying level. It's not a defining year that, you can be this and you can't be that. So to give and boost the confidence of the child, we should say you just have to qualify this level to know that you know this much and you're ready for the next one. And finally, for class 12, which I know NEP is talking about in a very positive way, that will be something which will help children. Because at college level, the anxiety is always, the moment you are in class 11, which stream, what, and more than the kids, the parents are worried whether they're going to get the admissions or not.
Second thing which I felt, now I'm going to allow all mobiles, tabs in the classrooms, because I have understood that this is something which we cannot now do away with. Textbooks are necessary, but to be kept in the libraries so that kids get into the libraries and study there silently and go through that. We have not gone through the textbooks. We are not even aware whether the children have bought the textbooks or not. If we could do that in this 1 year, I think we can do that in the next year. I know I'm going to annoy many publishing houses, but I will really urge that create a content which is, as one of our learned panelists have said, customize it and contextualize it. I think that's what is required. And it's very, very important. And I am going to use all my teaching learning material funds on the sports equipment, musical instruments, and skill development labs like tinkering labs and all, rather than on, just making just charts and papers and all around. Maybe less of writing, because I have also understood, right, for, and it's relevant to all, even the primary sections, that motor skills can't be developed by just holding the pencil. There are many more ways to develop motor skills. So let's not focus on writing, and let's go to digital world, because anyways they're going to write all their exams on the computer only. So then why create a fuss about writing skills only? I mean, that is very important. That is an art. I really believe that calligraphy is not everybody's cup of tea. So then why give it to everyone, right? So I'm very clear that as we were talking about rehabilitation of students, but it's rehabilitation of teachers also we need to work towards, because they are also used to certain setup at home and then coming online and all, but getting them back in colleges and being with the children, because they're also equally important and paranoid, to ensure that they are mentally and physically ready for that. And I feel this is a year of celebrating teachers and technology and empowering students so that they can decide what they want to learn and what they have achieved at the end of the year. That's all from my side. Thank you. Thank you so much, Namrata ma'am. To summarize, curriculum like a playlist and that works like a Google search. अभी की यही टर्मिनोलॉजी है, यही चाहिए, इसी तरीके की ईज ऑफ एक्सेस चाहिए, जो यूआई और यूएक्स के ऊपर गूगल और इन सब ने इतने समय की, इतने सालों की रिसर्च लगाई है, वो हमें अब अपने पढ़ाई के तरीके में भी लगाना होगा कि आपकी एजुकेशन डिलीवरी जो है उसका यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, वो आपको कंटिन्यूअस जज करना होगा, तभी बच्चा शायद उस कंटेंट को कंज्यूम करेगा. व्हाट्स गोइंग टू बी रिलेवेंट हैज टू बी रिसर्च्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीडिफाइंड, क्योंकि रेलेवेंस की डेफिनेशन जो है वो काफी कुछ चेंज हो गई ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम. क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है यही समझना बहुत मुश्किल हो गया अभी के लिए. कॉन्फिडेंस बाय असेसमेंट, अलाउइंग ऑल मोबाइल एंड टैब्स इन द क्लासरूम एंड टेक्स्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये काफी अच्छा स्टेटमेंट है जो काफी लोगों को ऑफेंड कर सकता है, बट दिस इज समथिंग दैट शुड बी डिस्कस्ड इन डिटेल, क्योंकि इसकी शायद अब जरूरत हो गई. अब बहुत ज्यादा उन किताबों पर निर्भर रहना सही नहीं होगा, बिकॉज नॉलेज अब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से रिलेट हो गई और इंफॉर्मेशन हर दिन बदल जाती है. So this is where the new textbooks retiring and mobile devices coming in is getting important. Creating content that's customized and contextualized, skill development via labs, writing not a cup of tea for everybody. हर एक को कैलीग्राफर मत बनाइए, क्योंकि हर एक जना, क्योंकि बार बार अब जब राइटिंग बोली जाती है तो स्टीव जॉब्स की स्टोरी सुनाई जाती है कि सिंस ही लर्नड कैलीग्राफी इसलिए इतने फॉन्ट्स होते हैं वर्ड में, लेकिन हर कोई कैलीग्राफर नहीं होगा और हर कोई स्टीव जॉब्स भी नहीं होगा. तो शायद उसकी जगह आप कंप्यूटर स्किल्स, टाइपिंग स्किल्स, ये सब सिखा दीजिए. और करिकुलम को बहुत डायनेमिक होना होगा, क्योंकि अब मार्च में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आने वाला है जो सबकी एक्सपेक्टेशन है एनईपी के बाद में. लेकिन हमें ये समझना होगा कि अब कोई भी एक कागज या कोई भी एक इंडिविजुअल अब सेक्रेड टेक्स्ट या सेक्रेड ह्यूमन बीइंग नहीं होगा एजुकेशन में, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा लोकलाइजेशन करना होगा हर स्तर पे और हर एक को इंडिपेंडेंस देनी होगी काम करने की. एंड फाइनली, सेलिब्रेटिंग टीचर्स and technology, teachers with technology is something that we need to understand and talk about. So thank you so much, Namrata ji, for these amazing thoughts. Let me now invite the next speaker for today, Dr. Anjali Srivastav, Director and Founder Om Learnings from Kanpur, Uttar Pradesh. हम लोग इस पैनल बनाते हुए एक चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि हर तरीके के लोग, हर शहर के लोग, हर स्ट्रेटा के लोग बार बार प्लेटफॉर्म पर आए, कि ऐसा ना हो ये प्लेटफॉर्म या तो एकदम एलीट के लिए बन जाए या एकदम टीयर 2 टीयर 3 के लिए बन जाए. तो हमेशा अपने आप को जगाने के लिए हम हर तरीके के शहरों से लोगों को बुलाते हैं
ताकि ये एक वेरिड और इंटरेस्टिंग कंटेंट बना रहे सभी के लिए. So over to Anjali ji for the next 3 minutes. A very warm welcome. The next 3 minutes are yours. Thank you, Daksha. Very good morning to all the dignitaries present over here in this Education Meet 2021. Wish you all a very happy, prosperous new year of learning and innovation. What I believe, the topic itself is describing the new beginning of the new wave of education system worldwide. It's a request to the management and to all the principal that once the students start coming to the school, please do not start with the curriculum. We need to start with the activities like know your school, know your teachers, know your friends, and know your environment, because they are coming after a year break. And I personally believe, while I was interacting with the teachers and all the principals, what I observed that inclusion of psychic education is must now. We are talking about various innovation and strategies, and one of it is psychic education, the development of inner development and outer development. When I'm talking about the child's inner development as well as teacher's inner development, it shows that to identify one's own inner self, self-awareness, and self-mastery. And when I'm talking about the outer development of a teacher and a student, it comes with design thinking, communication, collaboration, leadership, global citizenship, sustainable living, covenant, and collaborative management as well. And we should also introduce strategies and curriculum with some mindfulness learning as well inside the classroom. Because after a long time, the students, they are coming back to school, as Daksha has said, that we have to teach them again the discipline part. And one more thing is that I would say like that if you have a 1 apple and I have a 1 apple, when we exchange these 2 apples, we'll get 2 apples itself. And when we exchange one idea with other person idea, we'll have 2 ideas. So here in this platform, actually, we are learning the different ways of innovation and strategic planning of making the students aware of their learning skills. So when I'm talking about the mindfulness learning, we have to, create a kind of a gratitude wall, because throughout this particular pandemic, we learn one thing: to show the gratitude and being human as well. We have to create a mindful room as well. We have to create a mindful corners in the school, in the classroom. Again, the teachers, they have to be a researcher and they have to come up with these thoughts and the processes. We have to give them a mindful breaks also, because long time they are back at home and they are lying down, and when they are after 2-3 minutes, again, they on their video and they are alert, sitting all set. So we have to start giving them a kind of a mindful breaks as well. We have to give them a character strength activities, mindful coloring, mindful walking, observing your own school, because they're coming after a long time. So observe what are the rules and regulations. Everything is in the diary, but nobody cares to read the diary. So we have to make them aware about the diaries which school they are issuing it to the students. Mindful observation, what all changes they had seen after a year, what all change, the classrooms are changed or some places are changed. We have to make the school alive again. Have to give them a journal writing. The 3 things will happen. This will create a mindfulness approach. This will increase our productivity. This will enhance well-being and a psychological impact on a child. Because what happened, it will increase efficiency and will able to connect with the teachers as well the school's rules and regulations back again. And how to develop this mindful. Thank you so much, Anjali ma'am. The slot was over, but we'll try to come back to you. Don't worry. Once everybody speaks, there'll be an open floor. तब हम आपके पास वापस आ जाएंगे. To summarize what you said, कि जब बच्चे स्कूल वापस आए, please don't jump the gun कि तुरंत आप उन्हें पढ़ने बिठा दें. एकदम से सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश मत करिए. वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है, और स्कूल में आके इतनी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और स्क्रीन और पता नहीं क्या क्या के साथ में वो पढ़ पाए, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा. रीअलाइनमेंट टू द स्कूल एंड पीपल, सबसे वापस रीओरिएंट करना बहुत जरूरी होगा. लर्निंग अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, डिजाइन थिंकिंग, माइंडफुलनेस लर्निंग. और एक बात जो आपने कही सरस्वती और लक्ष्मी की, सरस्वती एक्सचेंज करेंगे तो दोनों के पास 2-2 होंगी, लक्ष्मी जी एक्सचेंज करेंगे तो दोनों के पास 1-1 ही होंगी. एंड एज इंडियन माइथोलॉजी वेरी वेल सेज कि आप नारायण को तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, नारायणी तक नहीं.
try to reach Vishnu, Lakshmi will come on its own. Don't try to reach out to Lakshmi, तो नारायण नहीं आएंगे, and that's where the real problem happens. और इंडियन माइथोलॉजी में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यज्ञ की जो सिखाई गई, और शिक्षा में लोगों को उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो शिक्षा दे रहा है वो उस यज्ञ में आहुति दे रहा है, और आहुति का मतलब यही होता है कि आपका एफर्ट खत्म हो जाना है, उसको भस्म हो जाना है। तो इसलिए ध्यान रखिए, व्हेन यू डू इट इन एजुकेशन, जस्ट डू इट एंड फॉरगेट इट। बस ये है कि आपको आहुति रोकनी नहीं है, and that's where Saraswati gets important, and that's where mindfulness comes in, and that's where composure comes in of the educationist, कि टीचर को और पूरे सेक्टर को अपनी जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच अंजलि जी। एंड फाइनली जिस बात पे आपने पूरी उसका कंक्लूजन किया, मेकिंग द स्कूल अलाइव अगेन, कि सब वापस से जग जाए, उतनी एनर्जी वापस आ जाए जो सब जिसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल एक्साइटमेंट के लिए बहुत ज्यादा आना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए शायद उतना नहीं आना चाहते, तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट और अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को मैच करना इज द न्यू चैलेंज। थैंक यू सो मच। Let me now invite the last speaker for today, Ms. Pooja Anjalikar, founder Maven of Education from Mumbai. Ma'am, over to you for the next 3 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Yeah, thank you. Very good morning to everyone. As I heard everyone, I could feel abhi ke time mein the most important thing what we are lacking behind is the trust factor. Most of the parents, the child have lost their trust into schooling as well as teachers, because the exposure has come so close. Pehle kaise hota tha, principal and teachers were not able to meet so oftenly, but here is like the teachers are getting exposed to the parents and the teachers, children. So this is like the gap which was there, which has been already filled now. So the trust factor somewhere has been lost, like, because in and outs of every weakness and strength has been known by the parent. So first important thing which I could understand is that the child should now trust back to the school after coming to school. And when he's thinking about padhai karne ke liye, to they have got so many ways, like now as ma'am said ki we can replace the textbooks with tablets, mobiles. Exactly, that can be done. With that, like, a child's mindset is more important, the emotion tank is more important, because the child has been attached so much to the parent. After 1 year the child is coming to the school, so how that 6 hours of sitting to the school will be replaced? Because 6 hours he was sitting at home at his ease, he was learning, and then again making him into the routine of the school would be a bigger challenge. So this would be the major issue which I feel. Apart from that is like, yeah, though the children were missing their friends, missing their environment of the school, but with that they were still missing the connection between the physical connection between the teachers and the environment. So this will again we need to bring out, because Corona has already taught not to touch. You do need to cover yourself. So that distance, before touching anybody, before being with anybody, the child will be having disturbance that shall I touch or not? Because to develop any skill without touching, it will be very difficult for anyone to learn, like. So that again will be a question to a child, said whether there is a vaccine or not. But still the child will be having that fear, shall I touch anybody? Even sharing the tiffin, because they had that eating together, walking on the queue, standing into the assembly. This all will be a challenge. This is small things, but it really will be challenge. The child should be given comfort where to travel, when he's traveling to the bus, even where I sit to someone, because social distancing and had fit in their mind that into sitting in the bus also I need to have some space, because in our Indian system on one bench we have 3 children sitting. At that time the child will be, because we have only taught them to maintain the social distancing in months since last 1 year, and again when they're coming to the school we need to change so many habits of them, like, because touching is okay or sharing is okay. So this all things we need to teach them. So that will become more challenge for us, which I feel. So 3-4 things like trust, emotion thing, and mindset of opening up towards the people, which I feel would be a challenge in coming up era. Thank you. Thank you so much Pooja मैम। आपने पूरा अपना जो बात करी वो करी ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर। ट्रस्ट फैक्टर ऐसा है जो भी ग्लोबली ड्विडल कर रहा है। आज हम सुबह जब उठे हैं सब जने, तो यूएस की कैपिटल हिल की फोटोग्राफ के साथ उठे हैं, और हम लोग डेमोक्रेसी पे ट्रस्ट अपना ड्विडल कर रहे हैं। तो ट्रस्ट फैक्टर तो पूरी सोसाइटी में वापस चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे चीजों को। सो दिस इज समथिंग दैट्स काइंड ऑफ नॉक ऑन आवर हेड्स कि गेट बैक अप अगेन एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एटलीस्ट एजुकेशन, क्योंकि अब आप जो नई सोसाइटी डिफाइन कर रहे हैं वो इन इमेजेस के साथ में शायद उतनी अच्छी डिफाइन ना हो।
सो वी हैव टू अगेन थिंक कि आपके पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स, बच्चे सब एकदम पास आ गए कि रोजाना बात हो रही है, रोज एक दूसरे से मिल रहे हैं, पेरेंट्स से सुन रहे हैं कि साहब फीस जमा नहीं होगी क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही. They now understand the commercial factor of it. And if they start judging education on value, तो आप क्लास का डेकोर या डेकोरम वापस नहीं ला पाएंगे. That's where the real problem now lies. कि बच्चा थोड़ा ज्यादा समझदार हो गया. जो प्री स्कूलर्स हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई है कि उनकी भाषा अपने पेरेंट्स के जैसी हो गई है. वो एकदम बड़ों के जैसी बातें करने लग गए हैं, because that's their atmosphere. Now they don't get to see each other. और उनके सेफ जोन्स जो थे, जो स्कूल्स थे, वो अब है ही नहीं. They don't have a own space for themselves. और हमने जो पूरे समाज ने किया ही फिजिकल डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग से सिनोनिमस कर दिया, जबकि ये दोनों बहुत अलग अलग हैं. तो हमें इन दोनों को वापस अलग करना होगा. एंड चेंज इन इंस्ट्रक्शंस रेगुलरली. हमें सरकार की इमेज ना बन जाए कि हर दिन कोई नया कागज आ जाएगा जो हमें नहीं पता होगा, लेकिन हम आप पे फोर्स अपॉन कर देंगे. तो हमें थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि हमारी इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो हो बच्चों को, वो उतनी चेंज ना हो, और अगर हो तो उसका ट्रांजिशन बहुत समझदारी के साथ हो, क्योंकि नहीं तो बच्चा आप पे आने वाले समय में भी शायद ट्रस्ट नहीं कर पाएगा. So thank you so much all the speakers. Now since we are nearing the conclusion of the round table, let me go to the chair and the co-chair for the concluding statements. Over to Gautam ji for the next 2 minutes for his concluding statements. Thank you very much, Dakshji. And indeed, in this discussion, I would again once thank Blub World, because they're bringing in the much needed cohesiveness in school education and higher education, because all the time it is seen that the conferences or the discussions those have been happening. They are either focused towards higher education or towards school education, but they cannot be separated. I mean, if we really have to think from country perspective or from world's perspective, we'll have to think it cohesively. So thank you very much, Dakshi, for that. Second thing, my take from this entire discussion is, I think somewhere we are culminating this discussion to emotional support, which was mentioned by almost everyone in some or the other way. But then, yes, this emotional support would be required. So that was my take, one of the important take from this discussion today. And one second take that probably I would like to study more and focus more in time to come would be the national curriculum framework, which Dakshi, you also mentioned. So probably the new education policy, there's the NEP and this NCF together, how exactly the impact is going to be. Because this opening doors of schools and colleges discussion might go for, to the best of my guess, maybe for next 6 to 8 months. But probably after that, things would start settling down, is my best guess. But then these two would be the golden takeaways, that emotional support to the students and the impact of NEP and NCF in time to come. So these were my two important takes of this discussion today. Thank you very much, Dakshi. Thank you so much, Gautam ji. Let's now have the concluding statements from Akhil ji. Akhil ji, आपका एक बहुत important aspect जो पूरे discussion में आपसे हम लोग expect भी करते हैं, आप KG to PG पूरा value chain देखते भी हैं, जानते भी हैं और operate भी करते हैं. तो इतने बड़े value chain को चलाते समय, what's your typical take कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जो generic perceptions जो लोगों के बने हुए हैं, वो operations को बहुत मुश्किल करते जा रहे हैं. So I'll tell you what, so more from a KG to PG perspective, and again, I don't believe in actually identifying mistakes, because that'll take like another 10 hours. But the problem is that ultimately what we need to understand is that I think most of the people who are into the education space, basically they have a certain passion for helping kids, right? And very often we tend to make decisions based on the best decisions that we can make with the environment that we have, the information that we have, and the regulatory structure that we have. I mean, most people I know have, especially teachers here, but most of the people I've seen in schools and colleges really want to help kids, right? And of course, they've been constrained by policy and things like that. But I think more importantly, and this is something I found at this session, is that there's a huge amount of ideas, a huge amount of content that everyone has submitted. But I think there are two large trends which I think have really, which has underlined this whole thing. One is that for once, parents and teachers have started to understand each other's mindsets. I think a lot of the teachers themselves are parents. So in a way, they actually had to deal with their own kids
working with online education, dealing with the pain and suffering of a parent while getting their own kids educated in schools, while they themselves are teachers teaching their kids. So suddenly there's a merging of mindsets. And as I think one of the speakers said earlier, is that the parents are also understanding the difficulty that the teachers are facing trying to get the kids occupied. Because imagine, normally if a kid was naughty, the parents say, let them send to class and let them, the teacher deal with it. Here you've got your kid who's naughty at home and is not looking at the class, and the parent is involved in sorting it out. So I think that sense of empathy, I think, is very important, and that will really help a lot more collaboration. Because remember, a child's education is really not just the school's responsibility or the parent's responsibility, it's a joint responsibility. And I think more that empathy has happened, more collaboration happens, that'll grow. The second thing I think that is also very, very refreshing in a way is that a lot of teachers are dependent. At one time, it's more like the teachers would all go to school. There was one building, and they would just blindly follow orders and just go things. Here, every teacher had to be an independent, Atmanirbhar teacher who actually has to manage their own class, manage the technology independently. So in a way, a lot of the innovations that have happened in education have actually come from the ground up, from the teachers. I think there's a certain amount of independence that has happened, which hopefully I think will carry on once we get back to regular classes. So I think the empathy aspect between the parents and the teachers is one thing. Secondly, that sense of independence that the teachers have to actually start innovating and really coming with new innovations. And hopefully the institutional management colleges and schools will realize that, look, let the teachers actually do what they should be doing, and let's not just push down policy. And of course, with the NEP allowing a lot more collaborative learning and cross-disciplinary stuff, I think that should be a great environment to do so. So I think I'm very optimistic about 2021. I think there'll be a lot of great new initiatives, not just from the policy management level, but I think right from the ground up, from the teacher level. I think that will really help us get India into the top ranks of education around the world. Thank you. Thank you so much, Akhil ji. आपने जिस बात पे पूरी फोकस किया, that was giving a lot of independence to the final guy, जो last mile connection है टीचर का, उसको बहुत सारी इंडिपेंडेंस देना, खुद भी थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाना और सिस्टम्स को फ्लूइड करना, क्योंकि सिस्टम्स इतने रिजिडिटी के साथ में अभी इंप्लीमेंट होते हैं कि पॉलिसी काम को ही क्या डिसरप्ट कर देती है. सो दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम टिल नाउ कि पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा था कि पॉलिसी की वजह से काम नहीं हो पा रहा था. लेकिन अब पॉलिसी थोड़ी सी खुली है तो इंस्टीट्यूशंस को भी इंटरनली थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा और टीचर पे थोड़ा और ट्रस्ट देना होगा कि ठीक है, कर लो, यू कैन डू इट. सो बिफोर दिस डिस्कशन कम्स टू एन एंड, ब्लब वर्ल्ड सिंपली बिलीव्स इन वन सिंपल थिंग कि हम लोग हमारे पूरे इकोसिस्टम के फाइनल कंज्यूमर से बात करना भूल जाते हैं, और वो जो फाइनल कंज्यूमर है उसको बार बार सुनना, उससे बात करना और उसके परसेप्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इसलिए ब्लब हर महीने ऐसे टीनेजर्स ढूंढता है दुनिया भर में जो कि कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनकी स्टोरीज फिर हम दुनिया भर के टीनेजर्स से वापस शेयर करते हैं. करीबन 6,500 स्कूलों के बच्चों से, पेरेंट्स से, इनसे हम लोग बात करते हैं अलग अलग ज्योग्राफीज के अंदर, इंक्लूडिंग द यूएस, द यूके, साउथ एशिया, पता नहीं कौन कौन सी जगहों से, भूटान से भी, हर तरीके के देशों से हम लोगों से बात कर रहे होते हैं एंड बच्चों से बात कर रहे होते हैं. हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे बच्चों से अलग अलग तरीके के टैलेंट समझे. So today we have one such kid for you who'll express his opinion or his understanding of things with his poetic talent. He's a teen poet, comes all the way from Ambala, Haryana. He's Moksh Chugh, who's a student of Army Public School from Ambala, Haryana. So Moksh, the next 3 minutes are yours for your poetry. A very warm welcome. A very warm morning to all the dignitaries here. Without wasting much time, I'll get to my poem, which is titled as The Catastrophic Night. It goes like, that night, I was heading towards north through my bus. Journey was as calm as a silent sea, whose beauty was even more enhanced when in came a virtuous girl. She came through a street and was simple and sweet. As meek as a bulletless gun, she sat silently. Unknown of the fact that the journey was going to take an awful turn, I was strangely captivated towards her, but never showed. On the inner side, I glowed. In came 3 passengers, as in a sea a swimmer dives. Went to the last seats, and I was having a negative vibe. The journey progressed, sky got darker, and so did the passengers. They started showing their actual colors, and I felt they were Eve teasers.
We five were in the bus and situation was turning to a fuss. They held me back and took control of the innocent. Those filthy people were all over her and I cursed myself, unable to help her. She screamed, she shouted, but the silence of that night was way more powerful than the decibels her throat produced. Those people, animals, raped her. The paths, those were sacred to her, were harshly destroyed by those demons. A flower was thrashed upon by a storm. I and the girl were half dead when the animals left. The next time I woke up was beside her in a hospital bed. Her parents even scared to say that she belonged to them. Surrounded by a mess of doctors and policemen, she lay all alone on that stretcher. It was the worst night one could ever witness. I took the girl to my place where she had some rest. Had I been more vigilant, the storm would have prevented. Having those thoughts in brain, I repented. I amended the things by accepting her, but that's not going to remove the scar. It's as prominent as a black spot on a white car. Thank you very much. Thank you so much, Moksh. The reason why you have to choose or you have to make art created by students is very simple. Kids might not speak to you in your language, but art makes them speak to you in a language that they understand. इसलिए हमेशा ये कोशिश करते रहें कि बच्चे जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, उस एक्सप्रेशन को कभी रोकिए मत. Because that is where you get your understanding for content creation, for information creation, for knowledge, and where they get their exposure and their expression. So thank you so much, Moksh. Before this call comes to an end, on the 10th of January, on Sunday morning, we'll be concluding the Global Education Meet. We have an amazing lineup of guests that day, starting with the chairman of AICTE, Professor Anil Sahasrabudhe. We have the Vice Chancellor of SRM University. Then we have Padma Shri Gauri Ishwaran speaking about her strategies for 2021. After that, we have Dr. Sanjay Roy, the founder of Jaipur Literature Festival, sharing his thoughts about literature and education. So we would want you all to be there because we have a special surprise for all of you that Blub World has planned. And as we do on all these calls, a small story of one teenager for you before we end this call. He's a boy, 13 years old, lives in Rio de Janeiro, Brazil, was born with a deformity where his fingers were fused, his legs were also fused, he could never leave the wheelchair. And that boy and his parents and his teachers created a story that's very, very inspiring for all of you and a life worth learning from. And he became the world surfing champion at the age of 13, and that's David Taxiaro from Rio de Janeiro, Brazil. And that's why we named him not disabled, but super able. And that's the way kids are. They are always super able, but you have to find the right point to talk to them, to get connected to them. So I hope you enjoyed the last 60 minutes that you spent with us. Thank you so much for being a part of the Blub World's 4th Global Education Meet. If you did, and if you want to attend the future sessions, open your audio, say a big yes, and thank you so much, people. Thank you so much. Thank you. Yes, thank you. Thank you We had very a much. lovely time. Really fascinating. Amazing. Thank you all very much. Thank you. Keep up the good work, Dakshji. It is really amazing. Thank you very much. All the best wishes. Thank you so much. Thank you, Sahani ji. Thank you very much. Thank you all very much. Thank you, everyone. All of you. Thank you. Anjali ji, Pooja ji, Namrata ji. Thank you.